Okay, so hello everybody, good afternoon and welcome to the EduphoreIAS the Hindu analysis live class। जैसा कि हमने 31 जुलाई 2 दिन पहले हमने एक इनिशिएटिव एक न्यू चेंज लेके आए थे इस डिस्कशन में, एंड वो ये कि क्वेश्चन आंसर्स भी हम साथ में एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन एंड एक मेंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कल एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए स्पेशली फॉर फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, एंड दैट वाज that question was related to the data is the new oil. Fine, based on our editorial discussion that the topic was the debate on data। एक एडिटोरियल हमने कल डिस्कस किया था स्पेशली हिंदू के ओपिनियन पेज पे, दैट वाज टाइटल्ड द डिबेट ऑन डेटा। उस बेस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था दैट इज डेटा इज द न्यू ऑयल। In the light of this in the light of this phrase, examine the current state of और स्टेटस ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 150 वर्ड्स में आपको आंसर फ्रेम करना था। ठीक है, सो सबसे पहले हम इस आंसर को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो लेट मी यूज द पीपीटी फर्स्ट एंड फिर हम हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस आंसर को देख लेते हैं, जस्ट बी गिविंग यू द आउटलाइंस। आंसर लिखते टाइम आपने वही आईबीसी का जो मॉड्यूल है उसको फॉलो करना है। ठीक है, आईबीसी दैट इज इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो क्वेश्चन था डेटा इज द न्यू ऑयल, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, डेटा इज द न्यू ऑयल। फाइन, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट you are asked to examine the current state of Indian statistical system, because lots of debates going on around this data system, data issues, we don't have authentic data and all. Fine, उस पे हम आएंगे, बट उससे पहले इस आंसर को डिस्कस करते हैं। तो डेटा इज द न्यू ऑयल, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इसको डिफाइन करना है। ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स इन योर इंट्रो पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो डेटा इज द न्यू ऑयल, this term or this phrase was introduced by or given by, you can say, a British mathematician। ठीक है, a British mathematician and data science entrepreneur, name is Harvey। ठीक है, Harvey Campbell, like this। Fine, he is the man who actually introduced this in the year 2006। ठीक है, later on in 2017 one of the most popular, you can say, the magazines, The Economist, again British this magazine Economist, used this phrase extensively, fine, in its one of the publications। उस टाइम से एक्चुअली डेटा इज द न्यू ऑयल फ्रेज जो है वो काफी चर्चित हुआ, पॉपुलर हुआ। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर पैराग्राफ। यू जस्ट नीड टू मेंशन ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन 1 to 2 lines। in next 1 line I said introduction, keep it for 3 to 4 lines। so next 1 to 2 lines you can use for defining this, what you mean by the data is a new oil। ठीक है, how data can be the new oil। so like oil, which is a finite and important resource for propelling the growth of an economy, fine, on the similar lines we need data today in order to propel the digital economic growth। ठीक है, तो इसलिए डेटा जो है it is like a new oil for the digital economy। fine, the world is talking about today, even in general and India in particular। fine, so this would be your introduction for this question। उसके बाद बॉडी पे आ जाते हैं। नाउ बॉडी आप कहां से यूज करोगे, सो बॉडी लिखने के लिए जो हमने कल डिस्कस किया था आर्टिकल, दैट वाज द डिबेट ऑन द डेटा। ठीक है, सो आप बॉडी में ये चीज उठा सकते हो यहां से। यहाँ पे 3 मेजर इश्यूज अंडरलाइन किए थे राइटर ने, एंड उसमें ये था कि, या आप इंट्रोडक्शन में ये भी लिख सकते हो जो कि मैंने कोट किया था कल, एक हमारे there is a journalist named Pramit Bhattacharya। ठीक है, so in a paper he actually wrote that India's statistical system was the envy of the world till the early 1970s। however
However, now you are balancing, so however over time this saw a steady decline and has reached its present state. क्योंकि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट थी दैट वाज करंट स्टेट क्या है, सो हियर इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट स्टेट. So this is how you can substantiate your answer. Even you can introduce your paragraph this answer with this his comments as well. ठीक है. So another, this is second way how you can introduce your answer. After this we have three major issues. Now comes the body part. So we'll be now discussing the issues related to the India's statistical system, especially related to the data administration. Fine. So number one, you would be mentioning three issues, 1, 2 and 3 briefly, and alongside that you can also mention questions in between, means related to that particular point. So कैसे? First इसमें issue है related to the quality and credibility of data. Fine. Quality and credibility of the data would be the first heading under three issues, and you can build up on this heading in further 2-3 lines like policy formulation, implementation and research are not possible without accurate and credible data. This is your first point. Second point would be related to the second issue, and second issue is there are multiple agencies providing data on the same set of indicators for the same sector but giving different numbers. Fine. Here too you can quote the example from the Ministry of Corporate Affairs portal, that is MCA 21 portal. So there are few companies, especially the shell companies, which are actually not providing the correct data. Another example. The third issue and the last issue that the writer mentioned in this in his article actually, and that was related to the competence and ability of the system to generate and disseminate high quality data. This was the third issue. In this again you can use an example, or fine, for example, this quality or dissemination of information can have impact at the macro level of economy. Fine. So this emanation of the data, alongside that this generation of data, high quality data, is preemptive again for digital economy. Fine. And lastly, after body, we are done with the intro, we have done with the body, and now comes the conclusion or the way forward. So third point you can build up like urgent attention required. This is what we talked about yesterday. So in this you can build up on like starting with the current. You can relate your answer with the current Niti Aayog's multidimensional poverty index, where this index is based on the NFHS National Family Health Survey, fifth round of National Family Health Survey 2019-21 data. Fine. But this survey itself is questionable in the sense that this NFHS survey covers just 6 lakh of Indian households in place of 30 crores of the total households. So again, this is a questionable. So this is how you can conclude your answer. You can also provide way forward of the solutions on the futuristic note, and that is there should be an attempt to move beyond dashboards and disseminate the data more transparently. So transparency is one of the important feature. Should be the important feature of the digital economy. And another suggestion could be going back to the Rangarajan Committee report 2001 and taking stock of what has been done could be a good starting point. So these are the 2 points of way forward. We have summed up or completed our answer with conclusion or way forward as well. So this is how actually you can write the answer. Now सेल्फ इवैल्यूएशन करने का बेस्ट तरीका ये कि इनमें से जो भी कीवर्ड्स मैंने आपको बताए वो कीवर्ड्स अगर आपने उन पॉइंट्स को मेंशन किया है अपने आंसर में, तो योर आंसर इज समवेयर इट्स गुड, फाइन, एवरेज टू गुड. अगर ये की पॉइंट्स नहीं है या इस ऑर्डर में आपने नहीं लिखा आंसर, ठीक है, सो प्लीज डू रीड दिस आर्टिकल अगेन एंड अगेन राइट द सेम आंसर. फाइन. दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस द आंसर राइटिंग फॉर दिस यूपीएससी एग्जाम. ठीक है. So that's it about this question and answer. Okay, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी हिंदू डिस्कशन, एंड उसके बेस पे फिर से मैंने 2 क्वेश्चंस बनाए हैं, एक प्रीलिम्स के लिए एक मेंस के लिए. उसको मैं एंड में आपको बता दूंगा. ठीक है. फिर आप कल अगेन प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग फ्रॉम दैट फॉर दोज क्वेश्चंस. ठीक है.
Now let us start with our Hindu analysis. If you have any doubt, anything related to this question and answer that we discussed, you can put the same in the comment section as well. ठीक है, चलो, तो आज है 2 अगस्त, ठीक है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू एनालिसिस। फर्स्ट पेज से, फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है एज सच। फ्रंट पेज पे, इससे कवर पेज बेसिकली, फ्रंट पेज अभी आएगा, तो कंप्लीटली एडवर्टीजमेंट्स, हमारे लिए कोई यूज नहीं इनका, ठीक है। तो 2 अगस्त द हिंदू, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज से देखो वही चीजें चल रही हैं। ऑल वायलेंस यू कैन सी, मणिपुर स्टेटस रिपोर्ट ऑन एफआईआर शोज देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा, ठीक है। कल भी चीफ जस्टिस ने मेंशन किया था कि जितने भी एफआईआर अराउंड 6000 ऑफ एफआईआर एंड स्टेटस रिपोर्ट जो है वो फाइल करो कोर्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मणिपुर की सरकार को ऐसा बोला था, ठीक है। उसके बाद इमाम किल्ड इन मॉस्क अटैक, हरियाणा डेथ टोल राइजेस टू 5। सो कल कुछ स्पेशली नूह जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहाँ पे कुछ ऐसा एंटी सोशल वायलेंस हमें देखने को मिला कल, एंड उसमें ये जो है imam was actually killed in mosque itself. So this is how the violence actually spiraled in the Nuh district of. चलो, अगर लेफ्ट साइड हम देखें तो कुछ ऐसा नहीं है। सेंटर ओज स्टेट्स ओवर 6300 crores. Then politics, then this is a good news for us. GST revenues registered 3-month high in July. तो जैसा कि बात करते रहे हम कि ओवर द टाइम, ओवर द मंथ्स, अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस देखोगे तो जीएसटी रेवेन्यू जो है, जो जीएसटी रेवेन्यू सरकार को आ रही है, वो ओवर द टाइम कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द इकोनॉमी, फॉर द गवर्नमेंटल रिसोर्सेज एज वेल, फॉर द रेवेन्यू। नेक्स्ट इज नो ट्रस्ट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन डिबेट इन लोकसभा फ्रॉम 8th of August. सो स्पीकर ने फाइनली टाइम अलॉट कर दिया, 8th August से इस पे डिबेट होगी। ओके, देन पॉलिटिक्स वी कैन लिव इट। हाँ, पटना हाई कोर्ट ने फाइंड्स कास्ट बेस्ड सर्वे ऑफ बिहार गवर्नमेंट परफेक्टली वैलिड। सो कास्ट बेस्ड सर्वे बिहार की जो सरकार है उसने स्टार्ट की थी, उस पर रोक लगा दिया था कोर्ट ने बीच में, एंड अभी कहा है कि इट्स परफेक्टली वैलिड एंड नाउ द गवर्नमेंट कैन रिज्यूम द सेम, ठीक है। नाउ सेकंड जो सिटी वाला पेज है दैट इज रिलेटेड टू ऑफ कोर्स दिल्ली। सो जो लोग दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं वो जरूर इस पेज को पढ़ेंगे, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि अवेयरनेस जरूरी है, ठीक है। अवेयरनेस जरूरी है, आप जहाँ भी रहते हो आसपास की चीज़ें पता होनी चाहिए क्या चल रहा है। उसके बाद फिर से वही सिटी एंड ऑल, ड्यू एडमिशंस नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट 2-3 पेजेस हिंदू के जनरली स्टेट से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिक्स की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी नॉट द पॉलिटिक्स, लॉज, एक्ट्स, बिल्स एंड पार्लियामेंट रिलेटेड अगर कुछ कल क्या आता है। देन यू सी अगेन पॉलिटिक्स एंड ऑल। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को लोकमान्य तिलक अवार्ड से फेलिसिटेट किया गया है कल, ठीक है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने की है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ओके, अगेन पॉलिटिक्स। तो इस तरह से हम पेजेस को छोड़ सकते हैं इनको। चलो फिर से स्टेट्स, केरला एसटीएफ फोर्स लोकायुक्त ऑर्डर, ओके, बीजेपी, ओके। तो लोकायुक्त एंड लोकपाल होते हैं, लोकपाल सेंटर में होते हैं, लोकायुक्त स्टेट्स में बेसिकली टू ओवरसी द करप्शन केसेस, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स करते हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लोकायुक्त करते हैं स्टेट्स में, लोकपाल सेंटर में। तो चंद्रयान की जर्नी सो फार जो रही है, 3rd हमें डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में। So Chandrayaan 3 spacecraft, which was launched on July 14, has left the Earth's orbit and entered the Moon's sphere of influence, following the translunar injection, which was successfully performed on August 1. तो कल इसरो ने कहा था कि सक्सेसफुली हमने ट्रांसलूनर इंजेक्शन को अचीव कर लिया है, एंड उसका जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि फाइनली जो चंद्रयान 3 है वो अर्थ की ऑर्बिट से मून की स्फीयर में एंटर कर चुका है, ठीक है। So we are waiting for that good news when this mission will be successful after 42 days, ठीक है। सो ये हमने मैन्यूवर की बात कर ली थी, ठीक है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन, ISTRSE performed the TLI translunar injection on August 1 to slingshot Chandrayaan 3 towards the moon. The perigee
पेरिजी मैंने कहा था पास, याद रखने का शॉर्ट तरीका जो है दैट इज पास, एंड अपोजी दूर। पेरिजी होता है जब डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ मिनिमम है, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड उस विंडो की, इसीलिए एक विंडो होती है फॉर लॉन्चिंग सच मिशंस। देखा जाता है कि जब दूरी कम हो, डिस्टेंस कम हो, तब लॉन्च किया जाता है मिशन को, सो दैट कि जो फ्यूल है या जो कॉस्ट कटिंग है वो कॉस्ट सेविंग हो सके, ठीक है। सक्सेसफुली रेज ऑर्बिट टू दिस मच, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स टोटल 5 स्टेजेस में हुए हैं। लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी फ्रॉम अर्थ टू मून, सो नाउ मून बाउंड मैन्यूवर्स गोइंग ऑन, ठीक है। August 5, Chandrayaan 3 expected to reach the lunar orbit. August 23 is the date. This date, lander is expected to touch down on the lunar surface at 5:47 p.m. So we are eagerly waiting for the August 23rd when this lander would be landing on or touching down the lunar surface. GI tag given to crafts from Rajasthan, mangoes grown in Goa. So GI tag एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रीलिम्स एग्जाम के, स्पेशली GI टैग्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स होती हैं, ठीक है, बिकॉज जिस ज्योग्राफी में पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बना है, सपोज यहाँ पे मैंगो की बात करें तो मैंगो कोई स्पेशल वेराइटी ऑफ मैंगो हो सकता है जो गोवा में पाया जाता है स्पेशली, सो उस रीजन उस ज्योग्राफी में पाया जाता है, इसलिए उसको GI टैग दिया जाता है, सो दैट दिस इज अ डिफरेंट विच डिफरेंशिएट एक्चुअली दैट प्रोडक्ट, ठीक है। एंड फिर उसकी इंपोर्ट भी काफ़ी अच्छी खासी होती है, एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छी खासी होती है, वेस्टर्न नेशन स्पेशली जर्मनी एंड ऑल इंपोर्ट भी करते हैं। So 7 products from across India, including 4 from Rajasthan, were given the geographical indication tag by the Geographical Indication Registry in Chennai, headquarter in Chennai. So this is the agency or body which actually provides GI tag. ठीक है। So क्या क्या है इसमें? The जलेसर धातु शिल्प मेटल क्राफ्ट, गोवा का जो आम है, मैंगो है, मांकुराड आम, गोवा बेबिनका, उदयपुर कोफ्तगरी मेटल, बीकानेर काशिदकरी क्राफ्ट, जोधपुर बंधेज क्राफ्ट एंड बीकानेर उस्ता कला क्राफ्ट फॉर द वंस व्हिच गॉट द टैग। तो ये रिमेंबर प्रीलिम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये इंडेड, ठीक है, क्योंकि कई बार आपको GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइनली हम एडिटोरियल पेज पे आ जाते हैं, फ्रंट पेज जो होता है किसी भी न्यूज़पेपर का, एंड इसमें द डेंजर्स इन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। नाउ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो गवर्नमेंट ऑन गोइंग सेशन में होपफुली इंट्रोड्यूस करेगी बाय दिस वीक और नेक्स्ट वीक, फाइन। सो इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो इट वुड बी अ काइंड ऑफ रेपिटेशन, सेम जो प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस की गई वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस डिस्कशंस। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस अगेन, दिस आर्टिकल अगेन, ठीक है। गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस करती है, लोग दिस पार्लियामेंट में पास हो जाता है, फिर उसमें क्या निकल के आता है उस पर हम टैप रखेंगे, एंड जब ये बिल फाइनली एक्ट बन जाएगा तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो जस्ट कीप टैप ऑन दैट फॉर द टाइम बिंग, ओके। दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है आज के ओपिनियन पेज से वो है ये, द IIM बिल इज अ बोल्ड मूव, written by T.T. Ram Mohan, is a former professor at IIM अहमदाबाद। So हुआ क्या, इसकी बैकग्राउंड क्या है? गवर्नमेंट ने कल पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड ये बिल है। बिल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, सारा कुछ हम देखेंगे, बट इससे पहले कि मैं आपको ब्रीफ दे दूं, IIM बिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 2017 में क्या हुआ, 2017 में भी गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, एंड उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने सारी जो मैनेजमेंट रिलेटेड ऑटोनॉमी है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIMs के होंगे उनको दे दी थी, ठीक है। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो बहुत कम हो गई थी, लिमिटेड हो गई थी, एंड गवर्नमेंट ने खुद से किया था ऐसा, किसी कोर्ट के कहने पे ऐसा कुछ नहीं, सो दैट की ऑटोनॉमी जो है IIM को मिले और बनी रहे। बट उसके बाद एवरी 3 इयर्स जो है वो IIMs को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उनको रिपोर्ट पेश करनी थी गवर्नमेंट को, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट की दे कम अंडर ऑफ कोर्स हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इटसेल्फ, तो गवर्नमेंट चेक्स एंड बैलेंसेस तो रखेगी नहीं इन पे, सीधी सी बात है। तो इसलिए जरूरी था कि इनको गवर्न करने के लिए इनको अकाउंटेबल बनाया जाए, जवाबदेही तय की जाए। तो एवरी 3 इयर्स दे एक्चुअली हैड टू दिस गिव रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ओवर देयर वर्किंग।
तो बट ऐसा नहीं हुआ। आउट ऑफ 20 IIMs बहुत ही कुछ कुछ ही IIMs हैं जिन्होंने, IIM बेंगलोर इज वन ऑफ देम अमंग द टॉप 4 IIMs 3Ms। तो उसमें से सिर्फ IIM बेंगलोर ने रिपोर्ट सबमिट की, बाकियों ने नहीं की। टॉप 3 और 4 की मैं बात कर रहा हूँ उसमें से। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी ये आपको ऑटोनॉमी भी दी गई, फिर भी आप उसको हजम नहीं, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो उस चीज को। तो गवर्नमेंट दोबारा से ये बिल लेके आई है, कल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, सो दैट की रीडू अनडू व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट हैज डन इन 2017 दिस पार्लियामेंट एक्ट। ठीक है, कि जो पावर दी गई थी अब सब वापस लिया जा रहा है, क्योंकि आपने उसको एक्सरसाइज ही नहीं किया। ठीक है, आपको पावर दी गई है, आप उसको एक्सरसाइज तो करो, नहीं किया। तो इसलिए ये कहते हैं कि द IIM बिल इज अ बोल्ड मूव, मींस he is talking about the positive points related to this bill. Let us see it quickly. Same चीज 2017 में पार्लियामेंट ने पास की द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एक्ट। द एक्ट which hugely expanded the autonomy already enjoyed by the IIMs contains an important clause. It requires the board of governors of the IIMs to commission an independent review of the institute at least once every 3 years and place the report in the public domain. ठीक है, सरकार को भी नहीं, पब्लिक डोमेन में रखना था ये रिपोर्ट, फिर भी नहीं कर पाई। 6 years ऑन, 17 के बाद 23 है तो 6 साल हो चुके हैं। वेरी फ्यू ऑफ द 20 IIMs have done so. Among the top 4 IIMs, only the review report of IIM Bangalore is available on the website. तो देख सकते हो। ठीक है, this act of omission gives us an indication as to why the government has thought fit to table the IIM amendment bill in the parliament. ठीक है, the last week only. No government can take kindly to non-compliance with the act of parliament. तो ये इसलिए गवर्नमेंट को अमेंडमेंट लानी पड़ी क्योंकि ये लोग they were not actually complying with the 2017 act. So the 2023 bill seeks to take back from the IIMs the powers that the government ceded in to them in 2017. The government seems to have judged that a dangerous governance vacuum has been created in the IIM system in the years since it relinquished control over these institutes. Now, what are the provisions of the bill? 2017 bill की पहले बात करें, was an extraordinary act of self abnegation by the government. Abnegation होता है खुद से अपनी पावर्स जो है वो, ऑटोनॉमी जो है वो दे देना IIMs को। ठीक है, आप all key appointments of the chairperson and board members and the director and the chairperson of the coordination forum of the IIMs were left to the BOG, that is Board of Governors. The government reduced the presence of the central and state government on the board from 4 members nominated to 2 just. So you see ki what government has done in the direction of giving autonomy to the IIMs, Indian Institutes of Managements. 2023 bill jo hai seeks to undo many of the provisions of the earlier act. It creates the post of visitor for the President of India. Now majority of the powers has been given to the President of India. Fine, he or she would be the post would be labeled as the visitor to the IIMs. The visitor will appoint the chairperson of the BOG. Now the visitor will appoint the chairperson of the BOG, one nominee on the selection committee for the director, and the chairpersons of the coordination forum for the IIM. So now majority of the power, almost you can say all the powers now vest in the president of the country. He or she will also approve all director appointments. The visitor can initiate any review of or inquiry into the affairs of institute and remove the director on his and her own discretion. Media reports suggest that the government has been unhappy with the IIMs for their lack of responsiveness to queries and suggestions in recent years, but there is more to the about turn. तो मीडिया ये कह रही है कि गवर्नमेंट खुश नहीं थी उनके रिप्लाईज एंड क्वेरीज रिलेटेड जो ऑन एंड रिलेटेड टू द नॉन कंप्लायंस विद द 2017 एक्ट, बट कुछ और भी है ये कह रहे हैं बिकॉज he had been a professor of at the IIM Ahmedabad, so of course he is the right person to stop this situation. There has been turbulence in IIM system in recent years of a sort not seen in the nearly 6 decades until 2017. तो कह रहे हैं कि अभी के टाइम में कुछ turbulence देखने को मिली है in the governance of IIMs or the IIM system as such. Examples कुछ देते हैं. IIM Ahmedabad faculty and alumni were up in revolt against the then director's decision to change the institute's logo.
and to demolish the Louis Kahn structures on the campus, which are widely regarded as among the architecture marvel of our times. Louis Kahn, he is an architect. Basically, he designed a building at the IIM अहमदाबाद campus. ठीक है, so उसको भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को जो है वो डिमोलिश कर दिया गया था. So this was again a matter of conflict between the government and this IIM Ahmedabad itself. Second example is IIM Calcutta. The majority of the faculty signed a petition against the director's way of functioning. See, director के against ही faculty चली गई. Next is IIM Rohtak. The government is locked in a legal battle with the institute over the director's continuance in the office. क्योंकि ये केस है related to the eligibility criteria और eligibility of the director himself. ठीक है, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट ही नहीं करते जो डायरेक्टर करंट डायरेक्टर है डायरेक्टर रहने के लिए. तो अगेन दिस लीगल बैटल इज गोइंग ऑन. सो दीज आर द एग्जांपल्स एक्चुअली. ठीक है, another issues you can see, there has also been a relentless rise in the fee for the MBA courses, which is not related to the cost of the course. None of this should come as a surprise. The IIM Act created a situation where there were no meaningful checks and balances on the director. So 2017 जो एक्ट था उसने कोई चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसे नहीं लगाए थे जिससे कि डायरेक्टर की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाए. The absence of norms on key matters such as the appointment of dean had been evident even in the years leading up to the IIM Act, as the government increasingly adopted a hands-off approach. Not hands-on approach, but hands-off approach, means giving altogether autonomy to the director and the institute itself related to the appointment of dean and all. The act served to worsen the situation. The director became accountable to BOG, that is Board of Governors, in which the two government nominees played a passive role. Individuals from industry, alumni, etc., who comprise the rest of the board have no stakes in their respective institutions and no incentive to exercise the necessary oversight. So this is again the negatives of the earlier this act and all the freedoms granted to them. Moreover, the act left answered the question, to whom are the boards now accountable? Yes, BOG is accountable to whom? Director is accountable to BOG, Board of Governors, but Board of Governors is accountable to whom? So this question was left unanswered, and therefore absolute power is not good for any sense. So boards were actually this Board of Governors. Boards in the corporate world are notoriously ineffectual despite the fact that they are subject to company law, regulation and monitoring by financial markets. To expect a BOG that is accountable to none to be effective is to demand a leap in faith. तो ये एग्जांपल दे रहे कि जैसे बोर्ड ऑफ प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं बोर्ड की, दे आर इनएफेक्चुअल, नॉट दैट इफेक्टिव इन द सेंस दैट दे आर सब्जेक्ट टू कंपनी लॉ, रेगुलेशन, चेक्स एंड बैलेंसेस बाय द शेयर होल्डर्स एंड ऑल, बट फिर भी इफेक्टिव नहीं है इतनी. इसी लाइन पे बीओजी जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ दिस आईआईएम्स, वी कैन नॉट डिमांड और एक्सपेक्ट इट टू हैव लीप इन फेथ. ठीक है, तो कुछ अच्छा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. Many ask now, how do private university in the US fare so well under board of trustees? ठीक है, there are several reasons. So हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट रैंक में नहीं आ रही है. क्यों नहीं आ रही है? So governance is one of the factor which is actually restricting us from being in the tops. ठीक है, so therefore there are several reasons for this, that why universities in US doing well, fine, under boards of trustees. Private universities are funded through large endowments. The state supports research in US. They are not in the game of making large profits on their academic courses. ठीक है, कि फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, but IIM अहमदाबाद की फीस देखोगे बहुत ज़्यादा है. Boards are manned by large donors who have a deep emotional connect with the institutions. So there in US, boards are generally made by, funded by, you can say, through endowments, through this large donors, and government just invest on or funds the research. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट्स के एंड यूएस के इंस्टीट्यूट्स के दोनों में एक बिग डिफरेंस है. तो इसीलिए नाम है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, नॉट द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. देयर इज डिफरेंस. Trust. ठीक है, like Tata is not a private company. Tata is a trust. Tata Trust. ठीक है. Educational institutions operate in a competitive environment. So in trust, basically the agenda is not profit making but the welfare of the institute itself. ठीक है. The members actually repose trust or faith in
the institute itself through endowments, and through donating the funds as well. So educational institutions operate in a competitive environment that imposes almost the discipline of financial markets on boards. In US, these factors don't operate here in India. So these are the different, or the points which actually differentiate the Indian institutes governance and the US's universities governance. Now, government control. The notion that government controls is inimical to the functioning of an educational institution is flawed. ये सोचना कि गवर्नमेंट की जो कंट्रोल है these universities or the institutes वो inimical है, that is not good, you can say, or it's restricting one is not, he is saying is flawed. ठीक है, so he is in favor of governmental control. The state controlled universities in the California system, where the governor of the state often sits on the board, are among the best in the world. तो यहाँ पे कैलिफोर्निया जो स्टेट है यूएस की, उसके एग्जांपल देते हैं कि कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है वो खुद भी बैठते हैं इन द बोर्ड्स ऑफ दिस on the boards of governors which are actually governing the Californian universities. ठीक है, government control has not kept the IITs, Indian Institute of Technologies, from creating a brand that is way above that of the IIMs. बिल्कुल ठीक बात है. The IIM brand is itself flourished for some 6 decades under government control because the IIMs enjoyed the fullest autonomy in all operational matters. It is the prospect of the brand being undermined by the lawless boards and directors that should be a matter of concern. So he is putting the blame on the lawless boards, that is board of governors and the directors. ठीक है, but advocating the government control. Giving even example कि last 6 decades में IIMs ने outstanding performance रही है, and that is under government control only. The government's move away not go down well with the sections of the middle class who long to place at least one child in the leading IIMs. बिल्कुल ठीक बात है कि अगर इनको ऑटोनॉमी दे दोगे तो दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द फी इवन. ठीक है, अब MBA अगर करनी हो IIM अहमदाबाद से तो you have to bear the huge cost for that. तो एक आम बंदा, आम इंसान नहीं सोच सकता, especially the middle class people cannot think of sending their ward or child to such institutes of higher learning. However, the verdict as of now must be that the government has shown courage in seeking to restore accountability in the IIM system. So this is a positive thing. No public institutions can be exempted from the principle of democratic accountability, and accountability to government and parliament is preferable to no accountability at all. Because ultimately democratic accountability, why? Because democratic accountability, in democracy the actual power resides in the hands of people, citizens. हम अपने नुमाइंदे जो हैं MPs MLA उनको चुन के एंड फिर वहां बिठाते हैं, फिर दे टेक द डिसीजन ऑन आवर बिहाफ. ठीक है, सो अल्टीमेटली it is the power of the people and the faith of the people which is actually lying in their hands. ठीक है, we have given them the right to exercise these rights or frame bill or seek accountability from institutions. Fine, so that's why this is called democratic accountability. So a very good piece of article, though smaller one, but covering major aspects or major problems actually I am facing today. ठीक है, तो इसको पढ़ना एंड समझने की कोशिश करना कि गवर्नमेंट ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया क्यों किया, क्या रिक्वायरमेंट्स है. एक डेटा पॉइंट हम देख लेते हैं. क्लाइमेट फाइनेंस एड्स अनदर लेयर ऑफ इनइक्विटी टू क्लाइमेट चेंज. Many countries in sub-Saharan Africa are in debt distress, are also among the nations that are most vulnerable to climate change. So जो गरीब देश है, स्पेशली सब सहारन अफ्रीका में देखो, जैसे कल हमने कल परसों नाइजर की बात की थी, तो नाइजर इज अमंग द पुअरेस्ट इन दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो प्रोमिसेस वर्सेस डिलीवरी. सो क्लाइमेट फाइनेंस में, क्लाइमेट चेंज में जो रिलेटेड इशू हैं, जो भी आप कॉप मीटिंग्स देखते हो, उसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट COP 21 ऑफ 2015 एक्चुअली, वहाँ ये कहा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एस्पेक्ट एंड स्पेशली फॉर एमिशन ऑफ कार्बन एमिशन. तो उसमें ये हुआ था कि एग्रीमेंट, ये बात ये निकल के आई थी फाइनली कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए एंड वो कॉम्पनसेट करेंगे थ्रू डेवलप्ड एंड पुअर नेशंस बाय प्लेजिंग $100 billion ऑफ दिस फंडिंग टुवर्ड्स द डेवलपिंग एंड पुअर नेशंस इन ऑर्डर टू हैव द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर दिस कंट्रीज. ठीक है, बट ऐसा नहीं हो पाया. ठीक है, अब आज के डेट में वो 2020 से स्टार्ट करना था, 23 में एक्चुअली समवेयर
not been able to meet even this target of $100 billion, but अब तो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स चाहिए, ठीक है, in order to control this rise in temperature and halt the climate change and all. The data for the charts were sourced from the International Monetary Fund, the World Bank, our World in Data Climate Funds update and all. You can see all these data are the authentic ones sourced from the Monetary IMF, World Bank. Okay, so CO2 emissions per capita emitted in 90, 80, 21 by the various geographical regions. तो अगर CO2 emission अगर आप देखोगे, ठीक है, in per capita terms, ठीक है, between 1980 to 2021 almost 41 years. So UAE की सबसे ज़्यादा है 21.8 है, ठीक है, in tons per capita tons के में देख रहे हैं 2020 में. उसके बाद अगर आप देखोगे तो यूएस की इतनी है, ओशेनिया कम है, यूरोप कम है, चाइना की कहीं ना कहीं, इंडिया की अगर आप देखोगे तो इंडिया देखो, इंडिया पर कैपिटा एमिशन में कम है, दो अब बढ़ रही है, बट फिर भी हम बहुत कम है. देखो दिस इज अ लाइन एक्चुअली, ओवर द टाइम वी आर एट द बॉटम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द पर कैपिटा कार्बन एमिशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, हमारी देख रहे हो आप ऑलमोस्ट चाइना से भी कम है, ठीक है. So these are the differences amongst the countries in per capita emission terms. Total climate investment by each World Bank region as a fraction of that region's total GDP in 2020 and 21. तो अगर रीजन वाइज देखें हम तो ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में टोटल जो इन्वेस्टमेंट की गई है, टोटल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट वो दैट 1% इन 21 एंड रेड वाला शो कर रहा है आपका 5%, दिस रेड शोइंग फॉर द ईयर 2020 कि कितनी फंडिंग की गई है बाय रीजन वाइज, वर्ल्ड बैंक के रीजन के अकॉर्डिंग. सो यू कैन सी साउथ एशिया जहाँ पे कि हम भी आते हैं इंडिया, तो कितनी 2020 में नो डाउट ये इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट हो हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, बट दिस इज बिलो 1%. The chart shows the total approved climate funds and the actual funds disbursed. So difference between the actual and this approved and actually disbursed towards each region. Region wise again, तो साउथ एशिया की बात करें क्योंकि इंडिया साउथ एशिया में आता है. सो अगेन यहाँ पे देखोगे तो टोटल अप्रूव्ड इज द दिस ब्लू वन एंड एक्चुअल डिसबर्स्ड इज द ग्रीन वन. सो सी द गैप, एस्टिमेशन इतनी थी बट डिसबर्स्ड एक्चुअली इज लेस देन 2000 इवन, राइट. सो अगेन दिस इज द इशू इन मिलियन डॉलर्स के टर्म में बात कर रहे हैं. क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स फॉर ईच कंट्री इन द रिस्क ऑफ डेथ डिस्ट्रेस बाय रीजन. So you can see South Asia, see these circles, climate vulnerability कितनी है in dead distress, high risk of dead distress, this one, moderate to low, ठीक है. So these are the data points actually, इसी चीज को elaborate किया गया है इस पूरे आर्टिकल में. So these are the good for just data points, आप किसी आंसर में अपने यूज कर सकते. नेक्स्ट इज द होलोसीन क्लाइमेट एनोमलीज. तो होलोसीन सबसे पहले होता क्या है? सो होलोसीन इज बेसिकली द प्रेजेंट एपॉक, प्रेजेंट टाइम पीरियड गोइंग ऑन क्लाइमेट एनोमलीज. फिर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एनोमलीज की बात कर रहे हैं. The modern societies have placed a considerable amount of trust in their scientists. Balancing accurate and reliable information with climate action can ensure trust in scientists, governments, initiatives addressing the consequences of climate change. Squandering this trust could render irreversible damage to the efforts. तो यहाँ पे ट्रस्ट जो है वो बनाने की बात की गई है किसमें? साइंटिस्ट में, फाइन, प्लस गवर्नमेंट्स में, सो दैट कि जो क्लाइमेट चेंज को हम रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम बनाए रखें, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को या ट्रस्ट जो है उसको स्क्वैंडर ना करें, ठीक है, सो दैट कि जो इरिवर्सिबल डैमेजेस होने वाले हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज को काफ़ी हद तक कम किया जा सके, ठीक है. खत्म तो नहीं किया जा सकता बट कम जरूर कर सकते हैं. सो लेट अस गो टू दिस longer and shorter time scales. A major assumption required to make the paleo proxy technique workable is that the process that produced the proxies have operated similarly back then as they do today. More specifically and crucially, for a period of hundreds of thousands of years, proxies, which are typically buried in the ocean and lake sediments,
can only record temperature anomalies, that is deviation from the baseline on time scale of century if not thousand. So anomalies is basically the fluctuation or differences in the temperature from the baseline कि कोई एक baseline लगा देते हैं कि suppose 50 years back temperature was this, today the temperature is this, so just you make a study कि what is the deviation in terms of temperature. ठीक है, for that matter they uses proxies which is buried in the ocean and the lake sediments. They are mixed by the ocean water above and the microbes within, smoothing out the information they actually contain over such long time scales. From this object, it is almost impossible to estimate even decadal or annual changes in long temperature, forget daily temperature. So these are the certain issues with the proxies which the scientists use for forecasting or checking the deviation on the time scale related to the temperature variation. Scientists derive estimates of temperature anomalies over shorter time scales from the tree rings, corals and the shells of marine and terrestrial organisms. तो प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इन सोर्सेज से भी हमें जो एस्टिमेट्स है, एस्टिमेशन रिलेटेड टू द टेम्परेचर अनोमली उसकी पता चलती, उसका हमें पता लगता है, ठीक है, उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बेसिकली साइंटिस्ट करते भी हैं. एंड इसमें यूज क्या क्या होता है, ट्री रिंग्स, कोरल्स एंड द शेल्स ऑफ मरीन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. इवन कि ट्री रिंग्स की स्टडी से ही पता लगता है कि ट्री कितनी ओल्ड है, ठीक है, एज क्या है एक्चुअली. बट इवन हियर द बेस्ट ऑफ द पैलियो प्रॉक्सीज ओनली प्रोवाइड वीकली और सीजनल टाइम स्केल टेम्परेचर एनोमली एस्टिमेट. तो यहाँ भी सिर्फ हमें जो व्हाट बेस्ट कैन दे प्रोवाइड इज weekly or seasonal time scale temperature anomaly estimates and not for the longer time scales anomalies. ठीक है, ठीक है. So paleo proxies first हैं क्या? So these are the biological and chemical signatures of the temperature, somewhere having been warmer or colder than a specific baseline. Such a baseline is typically from the modern times when thermometer records have existed. These measures are called proxies because they do not directly measure the temperatures. So of course, when you cannot do something directly, you use proxies in order to get the estimated results or to make the forecast. Similarly, in the spatial sense also, all temperature proxies are only local or regional estimates of historical temperature anomalies. Reliable local temperature anomalies also come with fairly significant uncertainties. So again, the issue is with even for the Holocene epoch, the period in which we evolved as modern humans, that began in around 9700 BC. Okay, global estimates which are based on averaging all local proxies have even higher uncertainties. So the article is all about the uncertainties or the issues or the anomalies related to the climate change forecasting or studying, ठीक है, making a study and estimation of the same. ठीक है, the Holocene epoch, अगर हम प्रेजेंट एपॉक की बात करें, द मोस्ट रेलिवेंट बिट ऑफ नॉलेज एक्सपर्ट्स माइट विश टू, होलोसीन एपॉक वो एपॉक है जहां से ह्यूमन बीइंग्स की एक्चुअली हम यू सी द पीरियड इन विच वी इवॉल्व्ड एज मॉडर्न ह्यूमंस एंड दैट गोज वे बैक टू बिगिंस फ्रॉम द 9700 BC इन फैक्ट. ठीक है, Holocene epoch can tell us something about the response of modern humans to climate change. हाँ, क्योंकि प्रेजेंट एपॉक की बात कर रहे हैं एंड हम यहाँ से मॉडर्न ह्यूमंस की बात करें, इवॉल्वमेंट की एंड ऑल. सो होलोसीन पीरियड दैट इज द प्रेजेंट एपॉक कैन एक्चुअली प्रोवाइड टू ग्रेटर एक्सटेंट द रिस्पॉन्स ऑफ दिस समथिंग अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ आवर modern humans to climate change. There is some evidence as to the causes of demise of various civilizations in this epoch. Yes, like, and climate related event was not always the sole or even the proximal cause. For example, IVC की जब हम बात करते हैं तो दो हम मानते हैं कि आर्यंस के आने की वजह से, या जो इन्वेजन थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई. बट ये भी मानते हैं कि फ्लड्स की वजह से एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल कैलेमिटीज भी वर द फैक्टर्स और द रीजंस बिहाइंड दिस, you can say, demise of Indus Valley civilization. At the same time, modern humans, bipedal ancestors, also survived larger climatic changes over the evolutionary time scales of hundreds of thousands of years. The Earth's climate has witnessed glacials or ice ages and deglacials for at least a century, at least a million years. The Holocene itself has been a
deglacial period with a relatively small volume of glaciers compared to proper ice age. ठीक है, तो यहाँ पे डीग्लेशियर्स की बात की, डीग्लेशियल पीरियड की बात की जा रही है, दैट इज होलोसीन एपोक, जो प्रेजेंट एपोक है, इट्स मोर और लेस डीग्लेशियल पीरियड. द paleoclimate serves as a rear view mirror for the evolution of future climates. Paleoclimate, study of basically climate, future climate, but only over longer time scales. Remembering that the climate is what we expect and weather is what we get. Yes, there is a distinction between climate and weather. Weather is what we get. Weather is a short-term phenomena. Climate is a long-term phenomena. Okay. So IMD takes into account the climate of many years to give the average of rainfall prediction in India. Okay, for the current year. A particular day of the particular year need not be same at all the same day. बिल्कुल ठीक बात है. Same day अगर आज भी देखो तो सुबह हो सकता है बारिश हुई है, शाम को कुछ और है मौसम. ठीक है. So weather can change in the short time scale as well from another year simply as a result of small differences in temperatures, winds, humidity, rain and so forth. इन factors की वजह से आपको ये changes देखने को मिलते हैं on daily basis. Global warming can produce record-breaking warm months and years, but we should be cautious about supposedly a record-breaking warm day. ठीक है. So global warming, of course, you can see कि यहाँ पे examples में man cools his face with water as wildfires burn near the village of Vati in the island of Rhodes, Germany. More so since even thermometer-based records are few and far between to make reliable claims of daily temperature records at the global scale. So even key limitations of this thermometer has also been underlined in order to measure the daily fluctuations in the global temperature or global scale. Now, endangering climate action. It is scientifically impossible to estimate daily temperatures even for a particular day from last year unless we have thermometer measurement. Perhaps they are all in the same vein as the widespread and persistent urge to report more and more alarmist claims without regard for their consequences. So yes, our focus is on more and more alarmist claims, but not related to the consequences of the same, that is climate change. Okay. So modern societies have placed considerable amount of trust in their scientists. Squandering this trust could render irreversible damages to the effort that scientists and government officials have been making to improve the global participation in the climate negotiations. The willingness of the governments to adhere to their climate commitments and the grassroots initiative that push governments and businesses into action and to support communities dealing with the consequences of climate change. So these are all required actually, and we need to, most of all, that is required for the citizens to place trust in the country's scientists and the government. Because if you see, India has, we have discussed per capita emission contribution in the world, very less, fine, less than even the world's average. And alongside that, our government has taken a lots of initiative in this direction, and this is and all we have, and we are on certain measures we have achieved the target before actually the target year we have fixed for ourselves. Okay, so you can see that government is doing better in this direction, and we need to also repose faith in, trust in our scientists as well for better results and outcomes. What can amendment forest this conservation act change? तो इस आर्टिकल को भी हमने डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसने कुछ अमेंडमेंट की है एंड उसकी वजह से कुछ चेंजेस हमारे को देखने को मिल सकते हैं, जिसको कि एनवायरमेंटलिस्ट काफ़ी सारे आर्टिकल्स से रिलेटेड जो आए थे न्यूज़पेपर में, उसमें भी इसको नेगेटिव सेंस में पोर्ट्रे किया गया, मीन्स क्रिटिसाइज किया गया उस चीज़ को, इस अमेंडमेंट को. So what is exactly the Forest Conservation Amendment Bill 2023? Did the states comply by the SC directive to undertake an exercise to identify their own deemed forest? Did the JPC, Joint Parliamentary Committee, flag any concerns with the bill? So we'll be checking it one by one in 3 questions. The story so far: the controversial Forest Conservation Amendment Bill 2023 passed by the Lok Sabha with limited debate awaits discussion in the Rajya Sabha. The bill aims to restrict conservation scope, exempt borderlands for strategic projects and allow some non-forest activities. ये सब हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में वन ऑफ द एडिटोरियल्स. ठीक है, इसमें ये चेंजेस की गई हैं. सपोज बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, डिफेंस पर्पसेस, बॉर्डर एरियाज में, ठीक है, वहाँ पे अगर रोड्स लेटर से कंस्ट्रक्ट करने हो या हाईवे बनाने हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे सकती है. एंड एंटायर दिस थिंग डिपेंड्स इन द इज लाई इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. So central government has total discretion to allow a project and not to allow.
The bill was introduced in the Lok Sabha in March. Thereafter, it was referred to a joint parliamentary committee comprising 32 members from both houses of parliament and across party lines. Okay. How does the bill restrict the scope of the act? The bill stipulates that only those lands that were notified as forest under the Indian Forest Act. हमने एक केस भी देखा था, गोल्डा वर्मन केस, जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहां पे ये कहा गया था कि हम जो फॉरेस्ट है उसकी जो डेफिनेशन, डिक्शनरी मीनिंग और डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, उसी को फॉलो करेंगे. ठीक है. Any other relevant law or were recorded as forest in the government records will be acknowledged as forest under this act as well. That is, जो सबसे पहले ब्रिटिश अंग्रेजों ने ये एक्ट लेके आया के टाइम पे जब ये आया था, तो नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, IFA 1927. This revision stands in stark contrast to the wide applicability of the extant act at present. Supreme Court judgment in 1996 had retreated such a broad application. It said that a forest includes all land recorded as such in government records regardless of ownership, as well as deemed forest. Deemed actually going to be forest. So this is how this 1996 judgment of Supreme Court is basically referred to as a Goda-Burman judgment. इसको हमने डिस्कस किया था in that article. तो ये ध्यान रखना, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो डिक्शनरी मीनिंग फॉरेस्ट की होती है उसी को हम मानेंगे. ठीक है. So why is the exemption for border infrastructure controversial? The bill seeks to exempt linear infrastructure projects like roads, highways from seeking forest clearance permission if they are located within 100 kilometers of the national border. अभी क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है आपको फॉरेस्ट एरियाज में, तो यू नीड टू गेट द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट डन. ठीक है. एंड देन फिर आपको क्लियरेंस मिलती है इसके बेसिस पे. यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है फॉर हाईवेज एंड रोड्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, स्पेशली इन द बॉर्डर एरियाज, दैट इज बॉर्डर within 100 kilometers of the national border. Experts have raised concerns because strategic linear projects of the national importance is an undefined term and can thus be misused by the government to push through infrastructure projects that are devastating for the local ecology. जैसे कि एग्जांपल हमने देखा था रिसेंटली चमोली एंड ऑल में, उत्तराखंड में. ठीक है. ये चार धाम जो प्रोजेक्ट है उस पर भी काफ़ी उसके अगेंस्ट भी काफ़ी कुछ लिखा गया था. ठीक है. काफ़ी लोगों ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने उसको ठीक है. So the bill was not referred to the actually relevant parliamentary standing committee, which in this case would have been the standing committee on science and technology. तो ये बिल जो है वो रेलिवेंट कमेटी को नहीं भेजा गया था. दैट कमेटी, रेलिवेंट कमेटी, इज स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, headed by Congress MP. As per the pre-legislative consultation policy, it is considered good practice to refer bills to standing committees for review, but the government bypassed this oversight function in this case. So again, this is the problem. They are underlining कि गवर्नमेंट को भेजना चाहिए था बिल इस पर्टिकुलर स्टैंडिंग कमेटी को, बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया. So did the JPC flag any concerns with the bill? The JPC did not propose a single change to the bill in its report despite receiving objections from tribal groups, conservationists, environmental lawyers, activists and citizens groups. 6 members of the JPC itself wrote dissent notes. The Ministry of Tribal Affairs also raised concerns about the amendment's application on community rights enshrined in the Forest Rights Act 2006. So 2006 है जो आपका फॉरेस्ट राइट है, ये राइट देता है बेसिकली द कम्युनिटी रिजाइडिंग अराउंड नियर द फॉरेस्ट. ठीक है. लाइक ट्राइबल पॉपुलेशन स्पेशली, उनको लाइक टिम्बर जो है कलेक्ट कर सकते हैं, नियर बाय जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज किया जा सकता है. ठीक है. सो इवन की मोटा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इसने भी कंसर्न रेज किया था कि इन कम्युनिटीज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है इस अमेंडमेंट की वजह से. अगेन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेल्फ. द बिल गॉट अ फ्री पास इन द लोकसभा एज मोस्ट अपोजिशन एमपीज वर प्रीऑक्युपाइड. ऑफ कोर्स लोकसभा में तो सरकार के पास मेजॉरिटी है, क्लियर कट मेजॉरिटी है. Irrespective of whether Rajya Sabha members seriously debate the bill, is a drastic break from the legal definition of forest. Its focus on creating carbon sinks and the uncertainty over its coverage don't bode well. So issue जो है वो focus on creating carbon sinks, हमने इसकी बात की थी कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ओशंस एक्ट एज अ कार्बन सिंक्स, जहाँ पे आप कार्बन एमिशंस जो है उसको स्टोर कर सकते हो. फॉरेस्ट they give oxygen and take carbon dioxide. So of course this is how you can manage a balance, especially in order to mitigate the carbon emissions and climate change. ठीक है. Fine. So these are the issues actually. ठीक है, related to this amendment. Fine. So that's it about the editorial and articles and opinion. Now let us have a quick look at the
facts and this miscellaneous facts. So panel has, remember, panel submits report on sub-categorization of OBCs after 6 years. Important hai, name, especially Justice G. Rohini Commission for the sub-categorization of other backward classes, caste groups on Monday submitted. So this panel, remember, name remember, Justice G. Rohini Commission actually is related to the sub-categorization of OBCs, has submitted its report after 6 years. It suggests breaking the caste groups into broad categories with the dominant caste getting the smallest share of 27% reservation. Okay, so this is a suggestion. This is very, very important, especially when you are writing, any answer, addressing any question related to social justice and all. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पूछा भी जा सकता है direct question that this particular commission is related to what. ठीक है, okay. Okay, not that important. No trust motion debate from 8th of August. Okay, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया दिल्ली सर्विस बिल इन द लोकसभा में वोसिफरस प्रोटेस्ट. ठीक है, सो कल भी हमने बात कर लिया था इस पे कि ये दिल्ली सर्विस बिल है क्या एक्चुअली. ठीक है, सो देखते हैं फाइनली ये एक्ट बन पाता है कि नहीं. होपफुली एक्ट बन जाएगा. Center owing this month 6,300 crores, 636 crores in Manrega's wages to 18 states and union territories. Okay. Most of the unclaimed bodies in Manipur are of infiltrators. Government ने ऐसा कहा है, फाइल की एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट. Okay. What else from the world page? Indian grants to be used in education healthcare in Sri Lanka's state areas. ठीक है, श्रीलंका को हम ग्रांट दे रहे हैं to be used in healthcare areas. Okay. GST revenues registered 3 months high in July and registered net growth of 10.8% compared with the July 2022. तो जुलाई 2023 में हमने 10.8% की net positive growth register की है. ठीक है, in collection of GST. So this is a good news for the economy and has touched or high to 3 months high to cross 1.65 lakh crore in July in net terms. This is a very good for the as far as the revenue concerned, the government. Okay, finally landed on the sports page. So that's it as far as today's Hindu editorial discussion is concerned. ठीक है, इससे पहले कि हम क्लास को देखो, इससे पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस डिस्कशन जो हमने आज डिस्कस किया, इसको देख लेते हैं क्विकली. एंड दिस इज रिलेटेड टू टुडेज हिंदू. एक क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नो ट्रस्ट मोशन. नो ट्रस्ट मोशन. फर्स्ट इज इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ पीपल, एंड सेकेंड ऑप्शन इज द फाइनल अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू the assigning of time and date of debate over the motion rests with the chairman of Raj Sabha. We need to check it out. ठीक है, so this is a question from today's Hindu editorial discussion analysis that you need to actually solve. Come up with the correct answer tomorrow. ठीक है, do solve it. And second जो आपको लिखना है actually, that is critically examine the Forest Conservation Act with respect to the recent amendments been made to it and in it. 10 mark per question 150 words में. ठीक है, so these are the 2 homework questions from the today's Hindu analysis. ठीक है, do come with these answers. Okay, so that's it from my side. If you have any query, anything, you can put the same in the comment section. Thank you. Stay tuned for tomorrow's Hindu analysis.